welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 3, and the name of the chapter is multiplication, right? So यहाँ पर हम multiplication की बात करेंगे. Let's find out what they are telling us. So they say read the conversation between Suhana and her father. तो कुछ बातचीत चल रही है सुहाना और उसके पापा के बीच में. पढ़ते हैं कि what they are talking about. Papa, how far is your office from our house? So सुहाना यहाँ पर पूछ रही है कि पापा आपका जो ऑफिस है वो हमारे घर से कितनी दूर है. So Papa says, dear, it's 24 kilometer one way और 48 किलोमीटर बोथ वेज. तो उसके पापा कहते हैं कि अगर एक साइड से लगाया जाए तो इट इज 24 किलोमीटर्स और अगर दोनों साइड से लगाया जाए तो इट इज 48 किलोमीटर्स. दैट मीन्स यू ट्रैवल 48 किलोमीटर डेली. तो सुहाना बोलती है इसका मतलब आप पूरे दिन 24 घंटे पूरे एक दिन में 48 किलोमीटर्स ट्रैवल करते हो. पापा, हाउ मेनी किलोमीटर्स डू यू ट्रैवल इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे? कि आप एक हफ्ते में यानी मंडे टू फ्राइडे में कितने किलोमीटर्स ट्रैवल करते हो. सो ही सेज यू कैन ऐड 48 5 टाइम्स टू गेट द आंसर. कि तो उसके पापा ने कहा कि तुम 48 को 5 टाइम्स ऐड कर सकते हो आंसर निकालने के लिए, जो कि हुआ 240 किलोमीटर्स. और इसके अलावा यू कैन ऑल्सो मल्टीप्लाई 48 बाय 5, या फिर तुम 48 को 5 से मल्टीप्लाई भी कर सकते. सो यूजिंग द सेम मेथड एज सजेस्टेड बाय सुहाना's फादर, color the portions representing the same amounts in identical color using multiplication. One has done for you. So यहाँ पर हमने देखा कि 10 plus 10 plus 10 plus 10 is equal to 40. करेक्ट. अब सेम इज द थिंग अगर हम 20 plus 20 plus 20 plus 20 is equal to 100, right? Then which is the same thing जो यहाँ पर दिया गया है 50 plus 50 plus 50 plus 50 is equal to 300, correct? And at the end we are left with 14 plus 14 plus 14 is equal to 42. Clear? So now we have the multiplication tables from 11 to 15. तो अब हमारे पास multiplication tables हैं 11 से लेकर 15 तक, right? So you can read them by your own, right? And learn them. We have fill in the blanks. तो अब fill in the blanks की बात हो रही है. So it is 12 into 6. 12 6 are 72. Then 12 sevens are 84. Clear? So in this way you are going to multiply them. Then we have to write yes or no. So yes or no लिखना है. Is 13 into 7 90? No. Right? So this is how you can solve them. Clear? Now, next, multiplication of a 3-digit number by a 3-digit number. तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3-digit नंबर को एक 3-digit नंबर से, राइट? सो हाउ इट इज डन, लेट्स फाइंड आउट. सो इट सेज multiplication by a 3-digit number is similar to the multiplication by a 2-digit number. कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं एक 3-digit नंबर को जो कि सिमिलर होता है मल्टीप्लिकेशन में बिल्कुल एक 2-digit नंबर की तरह. जैसे कि we have some steps over here. So it says step 1, multiply the number by the digit in ones place. सबसे पहले हम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे उसके ones place पे. Then we have step 2. Step 2 में multiply the number by the place value of the digit in tens place.
फिर मल्टीप्लाई करेंगे नंबर को प्लेस वैल्यू से उस डिजिट से जो कि टेंस प्लेस पर है. देन स्टेप 3, we'll multiply the number by the place value of the digit in hundreds place. नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे उस डिजिट से जिसकी प्लेस वैल्यू हंड्रेड्स प्लेस पे होगी. राइट. देन वी हैव स्टेप 4 which says add the 3 products. उसके बाद उन तीनों के तीनों प्रोडक्ट्स को स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 तीनों के प्रोडक्ट्स को ऐड कर देंगे. So it is done like this. It says example, find the product of 563 and 149. Correct. So we know that 149 is equal to 100 plus 40 plus 9. हमें पता है कि 149 is equal to this, right? तो 563 into 149, that means 100 plus 40 plus 9. So इस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया. 9 3s are 27, 9 6 are 54 plus 2 56, 9 5s are 40 plus 9 5s are 45 plus 5 is 50. So we wrote 50 over here, right? In the same way, we multiplied this from 40, right? Then we multiplied it from 100. Clear? And this we got the answer after multiplying 563 by 149. Clear? Then we have a common error. It says 21 into 24. तो हम इसे इस तरीके से करते हैं, right? But it is actually wrong. We have to do it in this way. हमें यहाँ पर एक 0 extra लगाना होता है. Moving ahead, we have the exercise which says multiply the following. जल्दी से इसे multiply करते हैं. So it is 269 multiplied by 725. So let's write it here. 269 multiplied by 725. Correct? So 5 9s are 45. 5 6 are 30 plus 4 34. 5 2s are 10. 10 plus 3 13. Then we'll add a 0 over here. 2 9s are 18. 1 carry 8 over here. 2 6 are 12 plus 1 13. 1 carry and 3 over here. 2 2s are 4 plus 1 5 over here. Then 2 zeros to be added. 7 9s are 63. 6 over here. Then 7 6 are 42 plus 6 48. Then 4 carry 8 over there. Then 7 2s are 14 plus 4 18. So after adding these 5 4 and 8 12. 1 carry 3 plus 3 6 plus 3 9 plus 1 10. 1 carry 0 here. 8 plus 1 plus 5 is 6. 6 plus 8 is 14. 14 plus 1 is 15. 15 here. 1 carry 8 plus 1 is 9. Then 1 over here. So the answer becomes 1,95,025. Right? Clear? Now, moving ahead, we have the topic which is multiplication of a 4-digit number. अब multiplication सीखते हैं 4-digit number से, right? So, सबसे पहले जानते हैं by 1-digit number. तो example है multiply 3428 by 9. तो 3428 को 9 से multiply करेंगे. Step 1, multiply the digit in ones place by 9. सबसे पहले ones place पर जो digit है उससे solve करेंगे उसको, right? Then to the tens place, right? Then to the hundreds place in this way. Then to the thousands place in this way. Correct? All these steps we need to follow, and hence at the end we'll get the answer. Thus, 3,428 multiplied by 9 is equal to 30,852. Clear? Then,
It is multiplication by a 2-digit number. अब 2-digit number से कैसे multiply करते हैं? Same procedure we need to follow, right? Multiplying it from ones place, then tens place, and then hundreds place, and after the end thousands place. Correct? Now, we have an exercise over here. Let's see what it says. Multiply the following. So it is 1542 multiplied by 23. So yes, 3 2s are 6, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 1 carry 16, 16, 3 1s are 3 plus 1, 4. Then it is 0 over here. 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 5s are 10, then 2 1s are 2 plus 1, 3. Then adding them, 6, 4 and 2, 6, 8 and 6, 14, 1 carry 4 over here, 4 plus 1 is 5 and then 3. So the answer becomes 35,466. Next, we have multiplication by lattice method. अब ये lattice method कौन सा है? Let's find out. So it is to multiply numbers using the lattice method. We first need to draw a box with a slanting line as shown below. कि अगर हमें numbers को multiply करना है इस lattice method को use करके, तो हम सबसे पहले we'll need to draw a box. हम एक box बनाएंगे slanting line के साथ, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है. Like this, right? So example की मदद से समझते हैं. Correct? Okay. First of all, they have explained the box also. This box has a space for the tens digit and space for the ones. कि इस box में ones के लिए space है, ones digit के लिए और tens digit के लिए. It is called a lattice with column 1 and 1 row. कि इसको हम lattice बोलते हैं जिसमें एक column और एक ही row होती है. Right? Multiply 96 by 54 using lattice method. तो हमें 96 को 54 से multiply करना है इस lattice method को use करके. So हम क्या करेंगे? Draw a lattice and write the numbers as shown. कि हम एक lattice बनाएंगे इस तरीके से और numbers को इस तरीके से लिखेंगे जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं 96 by 54. Clear? Then draw the diagonals and multiply as shown. कि हमें इनमें diagonals ड्रॉ करनी है और उसके बाद इन्हें इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है जैसे कि दिखाया गया है. राइट? सो सबसे पहले 5 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे विच इज 30. देन वील मल्टीप्लाई 4 बाय 6 विच इज 24 हियर. राइट? देन वील मल्टीप्लाई 5 बाय 9 विच इज 45 एंड देन वील मल्टीप्लाई 4 बाय 9 विच इज 36. करेक्ट? नाउ add the digits diagonally. अब हम इन digits को diagonally add करेंगे. Diagonally यानी कि now we'll add the digits diagonally, right? So it is like this, right? We have added the digits over here. In this step 4, the digits down the left side and then towards the right side on the bottom is the final product. अब जो digits हमें left side पे मिली और जो डाउन साइड पे मिली वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है विच इज 5184. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन बाय बॉक्स मेथड. अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे बॉक्स मेथड को यूज करके. तो ये बॉक्स मेथड क्या है? लेट्स फाइंड आउट. सो इट इज while multiplying we can break up both the numbers according to the place values and multiply as shown below. Right? कि जब हम multiply करेंगे box method के through तो हमें दोनों ही numbers को break करना पड़ेगा उनकी place values के according और multiply करना पड़ेगा इस तरीके से जैसे कि दिखाया गया है. So they say multiply 54 by 23 using box multiplication. Correct? So step 1, break 54
as 50 plus 4 and 23 as 20 plus 3. Correct? Then step 2, place the numbers as shown. अब हमें numbers place करने हैं जैसे कि दिखाए गए हैं. Right? So it is like this, 20 plus 3 and 50 plus 4. After that, multiply as shown below. तो हमें इन्हें multiply करना है जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है. Correct? Then add the products. फिर इनके products को add कर देना है and then we'll get the final product. Now, next we have word problems. So, says a box contains 284 apples. कि एक box में 284 apples हैं. Find the number of apples in 209 boxes. तो हमें apples के number निकालने हैं 209 boxes में. कि ऐसे ही 209 boxes हैं, उनमें total कितने apples होंगे. So simply we'll multiply the two numbers, which is 284 multiplied by 209, and hence we get the product that there are total 59,356 apples in 209 boxes. Let's pick the last one, which is the water capacity of a tank is 1,325 liters. Find the total capacity of such 74 tanks. तो 1 लीटर की कैपेसिटी इतनी है, तो हमें ऐसे ही 74 टैंक्स की कैपेसिटी निकालनी है. So it is 1325 multiplied by 74. 4 5s are 20. 4 2s are 8 plus 2 10. 4 3s are 12 plus 1 13. 4 multiplied by 1 is 4 plus 1 5. Then adding 0. 7 5s are 35. Writing 3. 7 2s are 14 plus 3 17. 1 carry. 7 3s are 21 plus 1 22. 7 1s are 7 plus 2 9. Then adding these two, 0 5 7 and 3 10. 5 plus 2 7 and 1 8. Then 9. So the answer is 98,050 liters. 8,050 liters is the answer. Correct? Now let's see the chapter at glance, that what all we read about this chapter. So it is when we multiply two numbers, the first number is called the multiplicand. जब हम दो numbers को multiply करते हैं, तो जो पहला number होता है उसे हम multiplicand कहते हैं. The second number by which multiplicand is multiplied is called the multiplier. कि जो second number है जिससे multiply किया जाता है उसको कहा जाता है multiplicand, right? Then the result of the multiplication is called product. अब जो result निकल के आता है multiplication के बाद उसे product कहा जाता है. The product of two numbers does not change even if we change the order of numbers. कि जो दो numbers का product होता है वो change नहीं होता है अगर हम दो numbers का order change कर दे तो भी. Correct? The product of 3 or more numbers remains the same even if we change the grouping of numbers. कि जो product होता है 3 या 3 से ज़्यादा numbers का वो same रहता है अगर हम उन numbers की grouping को change कर दे तो भी. Right? So that was all about the chapter. I hope you all enjoyed it and you all got the concepts really well. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.